and a very good morning to all of you, and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So as we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 15th January. Now, can you please tell me that 15th January is celebrated as which day? कौन सा famous दिन मनाया जाता है 15 जनवरी को? So I'm waiting for the answers. Am I audible? आवाज आ रही है? So please tell me 15 January celebrated as which day? I'm waiting for the response. So today is 15 January, Monday, and these two are important articles. This one talking about Mohammad Muizzu, the president of Maldives, sets 15 March deadline for India to withdraw troops. So we will be discussing about it. Then here is another article talking about over 600 flights delayed, 76 cancelled as season's worst fog envelops Delhi. So these two are important articles. Yes. Very good, Priya Chavan, Satyam Kumar, very good. So 15th January, I asked this question. Yes, Arva Punawala, you are also right. Is actually celebrated as Army Day. Now, the reason is why. Okay, so it is celebrated because in the memory of Field Marshal K.M. Cariappa taking over as the first Commander-in-Chief of Indian Army from the British General, British Army officer. Okay. So 15 January 1949, actually, the date on which an Indian became an army chief. So before that, the British was the army chief. Of course, you should be knowing it. So that is why 15 January is celebrated as Army Day. Now, there is another question. After the class is over, find out and answer it in the comment. Okay. That who was the first Field Marshal in independent India? In independent India. फील्ड मार्शल मतलब होता है 5-स्टार रैंक ऑफिसर, ठीक है. तो जनरली इन आर्मी चीफ जनरली जो होते हैं वो 4-स्टार होते हैं, बट समटाइम्स 5-स्टार रैंक ऑफिसर आई मीन 5-स्टार रैंक दिया जाता है कभी कभी, ठीक है. तो आपको ये बताना है कि फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया कौन थे, उनका नाम बताना है, ठीक है, और फर्स्ट 5-स्टार रैंक ऑफिसर इन आर्मी. ओके, सो गो एंड फाइंड आउट एंड आफ्टर द क्लास इज ओवर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना. ओके, यस यस हर्षवर्धन, वेरी गुड. हाँ, so I have got the answer. So the first Field Marshal of India was Sam Manekshaw. Sam Manekshaw. Okay. Yes. Okay. So you should be knowing it. Sir, have you taken quiz on app recently at 6 p.m? Alia Kausar, yesterday at 3 p.m. we have conducted a quiz. ठीक है. फिर अगर होगा हो सकता मे बी थर्सडे वगैरह को, so we will conduct another one. हाँ. Okay, Satyam Kumar, very good. You are preparing for NDSSB, good. So first field marshal actually is Sam Manekshaw. You should be knowing. ये सब direct questions आते हैं directly, ठीक है. The first 5-star rank officer. इन पर शायद फिल्म वगैरह बनी है ना. So you should be knowing it. Now, let's talk about this. Muizzu sets 15 March deadline for India to withdraw troops. Now, what exactly it is? I hope you are aware. Here is the Maldives president. Here is the Prime Minister of India. So actually, थोड़ा सा हम लोग background समझते हैं. देखो, actually. So these two are actually the leaders of Maldives. So Mohammad Muizzu is actually the new president. He became the president of Maldives on 17th November 2023. Okay? And Ibrahim Mohammed Soli was the president before him. अब देखोगे इनसे पहले ये president थे. And Ibrahim Mohammed Soli was considered as comparatively pro-India, and he is not very supportive of India. This is how the politics works. ठीक है, तो उन लोग के आगे जो internal politics है वो इस तरह की है कि एक पार्टी जो है वो प्रो इंडिया है, एक जो है नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ इंडिया, और यू कैन से प्रो चाइना टाइप. सो मेनी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट इज कॉलिंग हिम सपोर्टिव और प्रो चाइना एंड ऑल. इस तरह से आप समझ सकते हो. सो नाउ ही केम टू पावर ऑन 17th November. सो द मोमेंट ही बिकेम द प्रेसिडेंट, केम टू पावर, ही एक्चुअली आस्क्ड द इंडियन टू विथड्रॉ द मिलिट्री पर्सनल एंड ऑल. ठीक है, अब देखो ये 17 नवंबर को बने प्रेसिडेंट और 19 नवंबर की ये न्यूज है. Maldives president asked India to withdraw military personnel. तो क्यों? Because he is considered as pro China and all, and that is why he has asked it. उसके बाद देखो इस तरह की आर्टिकल आई थी. Maldives pro China president elect who is Mohammad Muizzu, so he is considered as pro China, and he has defeated. देखो लेकिन he has defeated the president Mohammad Ibrahim Mohammad Soli, who is considered as pro India. तो जो इससे पहले के president थे, just before him the president was considered as pro India. Okay, so these are actually the internal politics of the Maldives.
तो ही वॉज एक्चुअली इंस्ट्रूमेंटल इन दिस इंडिया आउट कैंपेन ऑल्सो. तो उस टाइम पर इंडिया आउट कैंपेन चला था कि इंडियन मिलिट्री शुड लीव द मालदीव्स एंड ऑल्सो दीज थिंग्स वेर इन द न्यूज. तो ये कुछ साल पहले ये काफी न्यूज में था, इंडिया आउट कैंपेन एंड ऑल. सो ही वॉज सपोर्टिव ऑफ दिस आइडिया ऑफ इंडिया आउट कैंपेन एंड ऑल. ओके, यस. Now, so Maldivian President Mohammad Muizzu has asked India to withdraw its troops from the island by March 15. ठीक है, तो उसने कहा है कि 15 मार्च तक उन्होंने कहा है कि जो जितनी भी इंडिया के मिलिट्री है उसको विड्रॉ कर ले इंडिया. दैट इज व्हाट इट हैज सेड. ओके, द सीनियर ऑफिशियल्स अनाउंसमेंट हैज मेड इवन एज इंडिया मालदीव्स हाई लेवल कोर ग्रुप सेट अप व्हेन मिस्टर मुइज़्ज़ू विजिटेड COP28 एंड ऑल. आपको पता होगा रिसेंटली क्या हुआ था. जैसे यहाँ पर इंडिया है, दिस इज मालदीव्स. ठीक है, एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स? माले. ओके, यहाँ पर कहीं पे अभी ये चूंकि मैप में नहीं आ रहा है, बट लेट मी शो यू. इस तरह कुछ है मैप. ठीक है, तो यहाँ पर यू विल फाइंड UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. ठीक है, सो बेसिकली जो है बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इज द केस इज दैट COP28 मीटिंग हुई थी. सो फ्रॉम वेयर एक्चुअली इंडियाज प्राइम मिनिस्टर विजिटेड. सो मालदीव्स प्रेसिडेंट वाज आल्सो देयर. COP28 दुबई में हुआ था रिसेंटली, वी हैव डिस्कस्ड इट एंड ऑल. सो वहां पे बोथ एक्चुअली मेट. ठीक है, दोनों की मुलाकात भी हुई, बट आई थिंक बट स्टिल द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स इज सेइंग दैट यू शुड विड्रॉ द ट्रूप्स एंड ऑल. ठीक है, अब देखो एक उसकी के बैकग्राउंड में उसकी एक हिस्ट्री है थोड़ा सा. वी आर आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स रिलेशन इफ यू टॉक अबाउट द पास्ट. अगर हम लोग पास्ट की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था इंडिया और मालदीव्स इवेंट के बीच 1988 मालदीव्स कू से रिलेटेड. सो प्लीज रीड दिस पैसेज and answer it. I'm waiting for the response. Capital is Male. Very good, Arva Punawala. The capital of Maldives is Male and the currency is Rufiya. Good. ये सब पूछ सकते हैं चूंकि न्यूज में. Yes. Yes, good. Gargi, Priya Chavan, Safi Nomani, Shweta's World, Arva Punawala. Operation Cactus 1988 is the right answer. ठीक है, so B is the right answer to this question. अब देखो इसमें हुआ ये था कि आपको एक चीज समझनी है. हुआ ये था कि पहले आपको ये समझना है what is coup. coup d'etat या coup कहते हैं. It is pronounced as coup but it is written like COUP and it means overthrow of democratic government by military. है ना, जनरली यही होता है. तो एक्चुअली जो एक गवर्नमेंट थी वहां it was led by Mamoon Abdul Qayyum. He was the president at that time. तो उनके खिलाफ मिलिट्री coup हुआ था. ओके, so it was led by the Maldivian businessman Abdullah Lutufi, and there are armed mercenaries supported by the Tamil secessionist organization and all. तो जब मिलिट्री coup हुआ था तो इसमें जो इंडिया ने सपोर्ट किया था थ्वाट करने के लिए. सो द अटेम्प्ट वाज थ्वाटेड मतलब फेल्ड है ना, मतलब उसको क्रश कर दिया गया द मिलिट्री coup को विद द हेल्प ऑफ इंडियन असिस्टेंस. तो इंडिया ने मदद की थी मिलिट्री coup को सप्रेस करने में, एंड दैट्स कॉल्ड एज ऑपरेशन कैक्टस ऑफ 1988. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So B is the right answer. ठीक है, to this question. That is what you should be knowing it. तो ये सब टर्म्स है. ऑपरेशन कैक्टस क्या हुआ इंडिया और मालदीव्स रिलेशन के बीच एक इंपॉर्टेंट इवेंट है. So that is what you should be knowing. Yes, Arva Punawala, very good. When there was a shortage of water, Operation Neer, good. So one time India's soldier entered the island for an actual military operation was in November 1988. ठीक है, to thwart an attempt to coup, है ना. तो इसीलिए जैसे ये आर्टिकल है ना, इसमें दे हैव डिस्कस्ड अबाउट इट इन डिटेल, है ना. तो यू आर वाचिंग दिस क्लास, नीचे जाना, एक लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करना. हियर इज द लिंक ऑन वन काउंसलिंग सेशन. क्लिक ऑन दिस लिंक एंड यू विल गेट दिस गूगल फॉर्म एंड प्लीज फिल दिस फॉर्म. दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है, सो आवर टीम विल अप्रोच यू, दे विल गिव यू सजेशंस एंड ऑल व्हिच CLAT you should attempt and all. Now, एक और आर्टिकल थी, over 600 flights delayed, 76 cancelled as season's worst fog develops in Delhi. Actually क्या है, अगर आपको पता होगा, if you are living in North India, we are witnessing worst fog. I mean, the people are not even able to see it properly. अगर आप देखोगे लगभग 600 flights were delayed, 76 got cancelled at IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. IGI एयरपोर्ट जो दिल्ली के एयरपोर्ट को कहते हैं, and I hope you are aware. So at the Delhi airport visibility range between 0 and 50 meters for 10 hours. मतलब इस वक्त एक ऐसा टाइम था जब जीरो एकदम हो गई थी विजिबिलिटी, 0 से 50 मीटर तक. इवन सामने का चीज भी एकदम पास का चीज भी नहीं दिखाई दे रहा था. So that was the visibility. This was the season's worst fog till now. The last such spell was seen in December 2019.
इतना बुरा हाल, यानी इतना वर्स्ट जो फॉग है दिसंबर 2019 में देखा गया, तो उसके बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि एकदम नजर ही नहीं आ रहा है एंड ऑल. So that is what the dense fog was there, and between 5 a.m. and 7:30 p.m. 245 inbound flights were delayed and 14 cancelled and all. तो इतने सारे फ्लाइट्स को डिले किया गया, कैंसिल किया गया. Okay. There were no departures from the Delhi airport till 11 a.m. as visibility was below 125 meters and all. तो 11 बजे सुबह से पहले कोई फ्लाइट्स को नहीं टेक ऑफ किया गया and all. So these were the things being talked about. ठीक है, तो इसी की बात हो रही है. और कई सारी ट्रेन्स भी अगर आपको पता होगा, आई होप यू आर मेनी ट्रेन्स आर एक्चुअली गेटिंग डिलेड एंड ऑल, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया. तो बहुत सारी ट्रेन्स डिले हो रही है. व्हाई? बिकॉज यू विल हैव टू, आई मीन द ट्रेन इज सपोज टू ड्राइव, आई मीन स्लो चलाना होगा. अगर फास्ट चलाएंगे तो हादसा हो जाएगा ना, बिकॉज नजर ही नहीं आ रहा है. सो इवन दे आर नॉट, द ड्राइवर इज नॉट एबल टू इवन सी द सिग्नल. अगर सिग्नल पे नहीं नजर आएगा कि ग्रीन है कि रेड है कि येलो है, तो ड्राइवर चलाएगा कैसे? दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एकदम धीरे धीरे ट्रेन चलाना है ना. So that's an issue. So trains are getting late. Many of the trains are in fact more than 10, 12 hours late and something like that. So ये सब भी हो रहा है because of these things and all. Okay. Now एक और था, राहुल vows for peace as he kicks off भारत जोड़ो नया यात्रा in मणिपुर. देखो this is a political article, तो मैं जनरली कहता हूँ कि political article बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट एक बेसिक आइडिया बस होना चाहिए कि what exactly it is. ठीक है, सो एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं, भारत जोड़ो नया यात्रा. So basically I hope you are aware, 1 or 2 years back he started भारत जोड़ो यात्रा, which was actually connecting South India से कन्याकुमारी से, that connected the North India. So south to north he traveled. शायद आपको पता होगा 1 or 2 years back. Now he has started Bharat Jodo Nyaya Yatra, which actually has started from Manipur, Imphal. I hope you are aware Manipur's capital is Imphal, and he will be traveling from actually east to west. Okay, पहले south to north गए थे by walk, and now he'll be traveling from east to west like this. Imphal, then Kohima, then Jorhat, in Assam, Itanagar. ठीक है, like this, सिलीगुड़ी, अररिया, पूर्णिया, मुर्शिदाबाद, like this. So this is the route, and that is how the final it will reach to the Mumbai. So that's how Manipur to Mumbai, 6,700 kilometers, 15 states and 6 days they will be walking. So that is what you should be doing it. बस इतना जानना से बहुत डिटेल नहीं जाना, but that's more than enough. इतना पता आपको होना चाहिए. ठीक है. Okay, yes. Now let's move on further. देखो we are running this mock test. तो MHCT का we have already conducted the mock test. So now the next mock test is about the Jamia BA LLB 15 to 21 January. We are running it. Then SLAT के लिए 22nd to 28 January. अगर आप MHCT की तैयारी कर रहे हो तो भी आप अटेम्प्ट करो. ठीक है, कोई भी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, you should attempt all these 3. Even I would suggest अगर आप इस साल CLAT AILET भी दे रहे हो, then still also you should attempt it. एटलीस्ट आपको तो आइडिया तो लगेगा कि आप कितने पानी में हो, कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना आता है, कितना नहीं आता है. सो डाउनलोड आवर ऐप, गो टू CLAT सेक्शन, है ना, एंड अटेम्प्ट दीज मॉक टेस्ट एंड ऑल. ठीक है, अगर आप नहीं भी एग्जाम दे रहे हो ये सब का, मान लीजिए कोई एक का दे रहे हो, बाकी 2 नहीं दे रहे हो, तो भी आप तीनों अटेम्प्ट करो. दिस इज व्हाट आई वांट टू से. ठीक है, सो दिस इज आवर ऐप. गो टू आवर ऐप, टॉक टू काउंसलर पे क्लिक करो एंड आस्क अबाउट आवर कोर्सेज एंड ऑल. देखो हर संडे को 1 PM और 3 PM पे फ्री सेशन चलता है ऐप पर. CLAT 2025 लीगल जीके एंड बूस्टर. तो 3 PM पे, जैसे yesterday we had a जीके रिवीजन, स्टैटिक जीके का क्विज हुआ था yesterday. तो संडे को होता है 3 PM पर, और 1 PM पे लीगल का होगा. ठीक है, सो ऑन आवर ऐप, तो आप जाके देख सकते हो, अभी भी रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल होगा yesterday का. एंड ये 2024 के लिए टेस्ट सीरीज है. इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग इट, कॉल ऑन दिस नंबर 9538895678. और ये 2025 का पेड कोर्स है, इस पर कॉल करना है 9538895678 पे. Now let's move on to the next one. The speaker's flawed move to determine the real faction. So this article is written by Mr. P.D.T. Acharya. He is ex-Secretary General of Lok Sabha. नहीं, ये वाला जो है ना, ये वाला ऐप पर होगा. ठीक है, जो 1 PM और 3 PM सेशन है, this happens on app. Okay. Okay, so now let's talk about this. He has written a speaker's flawed move. Flawed मतलब wrong decision एक तरह से, है ना, गलत decision. Move to determine the real faction. So basically he's talking about the Shiv Sena and all. देखो actually क्या, पहले आपको बताता हूँ. This was, we had discussed it. You remember, if you have watched our 11 January class, we had discussed about it, that the Speaker of Maharashtra Legislative Assembly, Mr. Rahul Narvekar, has taken some decision. Okay, now what was the thing? चीज ये थी कि there was one Shiv Sena. That was originally led by Uddhav Thackeray. Mr. Uddhav Thackeray, he was the chief minister. But in June 2022, an incident happened where actually
द शिवसेना गॉट स्प्लिट, दो हिस्सों में बढ़ जाती है. A section of MLAs and MPs moved to actually originally the Shiv Sena was having alliance with Indian National Congress and NCP, but the Shiv Sena got split. ठीक है, आपको पता होगा, we had discussed it, and this actually became two Shiv Sena. One is led by Uddhav Thackeray, other is led by Eknath Shinde. ठीक है, तो ओरिजिनली जो थे शिवसेना के हेड वो उद्धव ठाकरे थे, and he was the chief minister of Maharashtra. बट जून 2022 में इट गॉट स्प्लिट, दो हिस्सों में बढ़ जाती, एंड दिस शिवसेना लेड बाय एकनाथ शिंदे जॉइंस एक्चुअली द अलायंस विद बीजेपी, जबकि इनका जो अलायंस था वो कांग्रेस से था एंड एनसीपी से था. सो नाउ देयर वाज अ कंफ्यूजन कि व्हिच वन इज द रियल शिवसेना. अब इसमें कंफ्यूजन ये है ना. सो ही इज मिस्टर उद्धव ठाकरे, सो दिस इज हिज शिवसेना, एंड ही इज मिस्टर एकनाथ शिंदे, ही इज करेंटली द सीएम. तो जून 2022 में ये सीएम बन गए. ठीक है, which was actually supported by, so this is the Shiv Sena and this was supported by the BJP and all. Okay. अब इसमें ये confusion था कि कौन सी real Shiv Sena है, which one is the real one? Okay. Because originally the head of Shiv Sena was Mr. Uddhav Thackeray, and now the party got split and all. So finally the Maharashtra Legislative Assembly speaker, he decided that the real Shiv Sena is Shinde faction. लिखा ना, जो शिंदे वाले हिस्सा है, यानी ये वाला जो शिव सेना है, this one which is led by Eknath Shinde is the real Shiv Sena. So this is not the real one, this is the real one. That is what actually the Maharashtra Legislative Assembly speaker said. अब इसी पर author ने लिखा है कि that was a wrong decision. I mean, according to the author, the decision taken by Mr. Rahul Narvekar, the Speaker of Legislative Assembly, was not a correct one. So member of Legislative Assembly under the leadership of Eknath Shinde voluntarily gave up the membership of their party and later voted against the whip issued by that party, Shiv Sena. They incurred disqualification and all. अब देखो वो क्या बता रहे हैं कि वॉलंटरी गिविंग ऑफ द मेंबरशिप ऑफ देयर ओरिजिनल पार्टी और वोटिंग अगेंस्ट द व्हिप इज कंसीडर्ड एज डिफेक्शन. तो बताइए कि जो ओरिजिनल शिव सेना था, दैट वाज लेड बाय मिस्टर उद्धव ठाकरे, एंड इफ द एमपीज एंड एमएलएस केम आउट फ्रॉम हियर, देन दोज हु हैव कम आउट ऑफ दैट ओरिजिनल शिव सेना शुड बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ डिफेक्शन एंड दे शुड हैव बीन डिस्क्वालिफाइड. मतलब जो ओरिजिनल थे, ओरिजिनल पार्टी से निकल के आए हैं, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए था. दैट इज व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट. ही इज कोटिंग एंटी डिफेक्शन लॉ ऑफ 10th शेड्यूल एंड ऑल. तो वो 10th शेड्यूल को भी कोट कर रहे हैं. ठीक है, ओके ओके. नाउ सो 10th शेड्यूल was inserted in the constitution under which of the following amendment? 71st, 52nd, 93rd, 61st. What is the right answer to this question? आपको ये बताना है, because they are talking about it. The author is talking about the 10th schedule. It was inserted in the constitution under which amendment? 71st, 52nd, 93rd, 61st. What is the right answer? बताइए. Yes, 52nd amendment 1995. ठीक है, so B is the right answer. Provided for the disqualification of members, है ना. Yes, Gargi, Shweta's World, Priya Chavaniwala, right? ठीक है. तो ये बता रहे कि the petition was filed by the original Shiv Sena led by Mr. Uddhav Thackeray, है ना, which sought the disqualification of the Shinde group. तो इनका ये था कि जो ओरिजिनल शिव सेना जो पहले थी असल में, वो तो उद्धव ठाकरे के द्वारा जो थी, तो इन लोगों ने डिमांड किया था कि जो कम आउट हुए, मतलब जो लोग निकल करके आए हैं, उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए. दैट इज व्हाट दे रिक्वेस्टेड, दैट the Eknath Shinde camp should be disqualified and all because they have done originally the defection and all. So the facts placed before the speaker were that rebel MLAs under the leadership of Eknath Shinde had secret meetings in a far west state and did not attend the crucial legislative meeting. तो क्या होता ना, I hope you are aware they went to Guwahati and all, where actually that was in the news, है ना. So Uddhav Thackeray, without giving any reason, this rebellion by the group of MLAs loyal to Eknath Shinde culminated in the formation of alliance with the party in opposition and Shinde being sworn in the CM. तो हुआ ये था कि जो ओरिजिनल शिव सेना है, उसमें से स्प्लिट होकर के लोग they went to actually Guwahati and they had a meeting, some of the MLAs, है ना, and they then formed an alliance with BJP and they formed the government. Okay, so these are the things the author is talking about, led by Eknath Shinde and all. अब इसमें बहुत डिटेल में जा रहे हैं. he is giving many judgments of Supreme Court and all. Then according to the author, the decision taken by the speaker is not correct. It is a flawed judgment, it is wrong judgment and all. अब वो एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कहां कहां पर डिस्क्वालिफिकेशन में एक्सेप्शन होता है. So he's actually quoting कि कहां कहां पर डिस्क्वालिफिकेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो केस था जिसमें से एक केस खत्म कर दिया. पहला वो कहते थे स्प्लिट, अनदर वो कहते थे मर्जर. ठीक है, स्प्लिट 1/3 होता है और मर्जर 2/3 होता है. इसमें होता है कोई पार्टी, उसका लेट से 30 सीट्स है. सो इफ 1/3 of the MLAs decide to come out, 1/3 इसका कितना होगा, 10 MLAs comes decide to come out and they form their own party. मान लीजिए पार्टी X थी, इन लोगों ने पार्टी Y बना ली.
So they will, these 10 MLAs will not lose the seat because they are 1/3. ओके एक ये था कॉन्सेप्ट. नाउ दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन रिमूव्ड. तो वही लिखा 91st अमेंडमेंट में, ये वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया गया 91st अमेंडमेंट में. सिर्फ मर्जर बचा है. मतलब क्या है कि जैसे देयर आर 30 MLAs और उसमें से 2/3 कितना होगा इसका? 2/3 विल बी 20. इफ दे मर्ज विथ एनी अदर पार्टी, लेट्स से ये एक्स पार्टी से थे और ये जाके ABC पार्टी में जाके मर्ज कर गए, दिस इज अलाउड. So this is only one exception जिसमें 2/3 MLA उठ कर किसी और पार्टी में जाके मर्ज कर जाए. This is allowed. So the author is quoting that the Eknath Shinde group has not merged. जैसे Eknath Shinde group, अगर even if it is 2/3, they have not merged with the BJP. Okay. So in that case कि how this exception will work and all. ठीक है. So that is what he is talking about कि दो example बताए, split और एक merger. तो split खत्म हो गया, split नहीं allowed है, merger allowed है जिसमें 2/3 MLAs या MPs जो हैं वो दूसरी पार्टी में जाके मर्ज कर जाए, उसी पार्टी का हिस्सा बन जाए. सो दैट इज अलाउड ओनली. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट. नाउ ओनली मर्जर इन प्रोविजन इज अलाउड, है ना. सिर्फ मर्जर अलाउड है which can protect defectors provided the conditions stipulated in para 4 are met, with the main condition being the merger of defectors party with another party, है ना. So merger सिर्फ allowed है. That is what you should be knowing it. So then he is quoting different things and all. He is quoting the judgment of Supreme Court and all. ठीक है. So and he's saying that instead of speaker it should have been decided by the Election Commission of India. अब इतना डिटेल आपको नहीं जाना, no need to go that much in detail and all. Yes, 61st amendment जो था, it reduced the age of minimum voting age from 21 years to 18 years. Yes, right. Arva Punawala, very good था. Prohibitive gains, rising food prices may affect already weak consumption of goods. So actually the author is talking about the recently released CPI data. देखो CPI, WPI we have taught in our paid classes. ठीक है. सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आया. ठीक है. इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय सीपीआई एक्सपेक्टेड क्विकन टू अ 4-month हाई इन दिसंबर. तो इसमें हाई हो गया, इंक्रीज हो गया. देन वी हैव टॉट अबाउट व्हाट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है. ओके. सो बेसिकली इन कोर इन्फ्लेशन व्हाट वी डू इज वी सबट्रैक्ट हेडलाइन माइनस फूड एंड फ्यूल. ठीक है. सो कोर इन्फ्लेशन जो था होता है उसमें क्या होता है कि हेडलाइन जो मेन इन्फ्लेशन होता है उसमें फूड एंड फ्यूल अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए, दैट्स कॉल्ड एज कोर इन्फ्लेशन. सो दीज आर द थिंग्स बीइंग डिस्कस्ड. अब देखो क्या बता रहे कि फूड प्राइसेस इंक्रीज, है ना. राइजिंग फूड प्राइसेस. नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर राइज ऑफ फूड प्राइसेस. क्या क्या रीजन हो सकता है? बहुत सारे रीजन होता है. जैसे एक हो सकता है मे बी बिकॉज ऑफ मॉनसून इफेक्ट. जैसे लास्ट ईयर जो एल नीनो आया था. सो वी हैव टोल्ड यू दैट व्हेनेवर देयर इज एन एल नीनो इट एक्चुअली वीकेंस द मॉनसून. मॉनसून रिड्यूस, कमजोर हो जाता है ना. दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. Pace was marginally slower and all. So these are the things. Disconcertantly, sequential price gains accelerated the most in the and all. तो अब बहुत सारी चीज बता रही कहाँ खाने के दाम बढ़े, है ना. So these are the things, है ना. The author is talking about. With the current Rabi season showing of pulses on January 12 almost 8% lower than the corresponding. अब देखो एक होता है रबी क्रॉप, है ना. रबी क्रॉप ठंडा में उगाया जाता है ना. November, December में it is sown and it is generally harvested in March, है ना. So that's called as रबी क्रॉप. So the author is saying कि 8% लोअर हुआ है रबी क्रॉप्स, है ना, सोइंग. सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग इट. ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन इन वेजिटेबल प्राइस आल्सो रजिस्टरिंग अ डिजी ऑलमोस्ट 10% पॉइंट्स अपसर्ज एंड ऑल. तो इवन जो वेजिटेबल प्राइसेस उसके भी दाम बढ़ रहे हैं एंड ऑल. सो दीज आर द थिंग्स द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट. देन द ऑथर इज कोटिंग स्पाइरलिंग क्राइसिस इन वेस्ट एशिया. अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यस हियर इज इंडिया. दिस एक्चुअली रीजन इज कॉल्ड एज वेस्ट एशिया. इसको हम लोग वेस्ट एशिया कहते हैं ना, जिसमें आ गया सऊदी अरब, ईरान, इराक, है ना, कुवैत. Then we have Israel here. That is also things you should be knowing it. So here there is instability. We have seen the war and all. So इससे क्या होता है, जब भी वेस्ट एशिया is famous for what? For oil supplies. तेल सप्लाई करते हैं ना वेस्ट एशिया से. So if there is instability in West Asia, what will happen? If there is any issue in West Asia, there is a probability that maybe oil prices will increase. हो सकता है oil price increase हो जाए. So when the oil price will increase, we will import it at a costly price. Import bill बढ़ जाएगा, है ना. So then we will have to, I mean, the inflation happens in oil. और जब भी oil, diesel, petrol में inflation होगा तो सारी चीज के दाम बढ़ते हैं. I hope you are aware. We have discussed this in our paid classes. That if there is an increase in prices of oil, like let's say petrol or diesel, the probability of price rise is higher. है ना. All these things are linked to each other, है ना. सब एक दूसरे से linked है, right? So that is what you should be knowing it. फिर नीचे आर्टिकल द delusion of eliminating the last terrorist. So basically the author is talking about an incident
where actually Rajouri Poonch district में terror strike happened in Dera की गली where 4 soldiers were killed and all, died and all. तो एक पहले एग्जांपल ये दिए, the author is actually giving Dera की गली यहाँ पे, this is Jammu and Kashmir state, union territory now, and यहाँ पे आपको राजौरी सेक्टर मिलेगा, राजौरी पूंछ यहीं पे मिलेगा. So here actually 4 soldiers died in encounter with terrorists in Jammu and Kashmir. So he has quoted it. Then after that, there has been one incident that happened was actually around the same time there was a media report giving nuances related to number of terrorists killed by paramilitary force and all. उसके बाद एक और ये हुआ था कि 3 civilians were alleged to have been killed by security forces and all. तो ये भी न्यूज में इस इंसिडेंट के बाद, जैसे ये 22 दिसंबर को है ना, so just 1 or 2 days back later, this actually was in the news where actually there have been allegations of custodial torture. So there is an allegation that army arrested few people and they died in custody due to torture and all. And after that, army chief visited Poonch district and he said behave in a professional manner. So there have been allegations that some army personnel were actually involved in torture and all. Days after torture probe, army chief visits Poonch, behave in a professional manner. This was in the news. So फिर वही सब बता रहे, while it cannot be denied that neutralizing terrorists is one of the most crucial objective, कि the terrorist elimination is the main target and all, but at the same time he is talking about it should not become the overriding factor, especially in the present context of lower terror indices. ठीक है, तो ये सब बता रहे हैं कि indicate the argument related to the futility of an obsession with the number of kills. तो सिर्फ इस पे नहीं जाना कि कितने नंबर ऑफ किल्स किए, यानी कितने लोगों को मारा गया, मतलब I mean the number of terrorists being neutralized and all, है ना. बट इससे ज्यादा मीन्स ओवरऑल वी हैव टू सी वेदर एक्चुअली द थिंग्स आर becoming better or not, whether it's becoming more safe, securities and all. That's the idea, whether things are fine, the economies are working and all. ठीक है, ये सब चीजें उसको आप पढ़ लेना, ठीक है. So just go and read it. Okay, so these are the things. Winning the hearts and the minds of the population has been glitched but most overlooked dictum. तो ये भी चीज है कि लोगों के दिल, जो कॉमन मैन है, उनको ट्रस्ट, उन पर ट्रस्ट डेवलप होना है ना, और उनके हार्ट्स एंड माइंड्स को जीतना है, बिकॉज सो दैट दे कैन हैव ट्रस्ट विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल, राइट. सो दैट्स द आइडिया, ठीक है. लीडरशिप इज ऑल अबाउट कंपनसेटिंग एनी कॉस्ट टू द सोल्जर विद द लीडर स्टैंडिंग अप टू ब्रिज द गैप बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड सोल्जर, है ना. सो दीज आर द थिंग्स ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट. इस साइड में एक आर्टिकल है, द अरेस्ट ऑफ सवाद हु वाज इन्वॉल्व्ड इन चॉपिंग ऑफ द पाम ऑफ अ कॉलेज इन प्रोफेसर ऑफ केरला. देखो एक्चुअली क्या हुआ था, ये 2013 साल पहले की बात है, आई थिंक 2011-12 की बात है ना, 2010. Actually, there was a professor, his hand was chopped off, हाथ काट दिया गया था by someone because there was an allegation of blasphemy and all. You understand blasphemy? देखो यहाँ लिखा होगा कहीं पे. And this led to blasphemous reference. Blasphemy मतलब होता है actually any content which is actually considered as hurting to religion, है ना, इस तरह का, or insulting any religion. So it is said that the professor whose hand was chopped off, there was an allegation of blasphemy, and because of which some people cut his hand and all. So these people were now arrested by NIA and all. So that is what the author is talking about and all. So the state was able to ensure that incident did not spark communal tension. तो state ने government ने पूरी कोशिश की थी कि communal tension नहीं हो जाए, ऐसा नहीं, because the person who had chopped off, the perpetrator, and the one who is the victim were from different religion, or the accused, you can say the accused and the victim were from different religion. So in that case, sometimes the communal disharmony also happens. So that is why the government ensured that these things should not happen and all. तो ये सब चीजें, now the NIA took over the investigation, they have arrested people and all in this regard. The NNC had announced a bounty of 10 lakh rupee for information on Sawad. So 10 lakh रुपए का उस पर मतलब बाउंटी भी रखा था कि one whosoever give the information about this person, we will give them 10 lakh rupees and all. So that was also in the news and all. फिर regulating India's online gaming industry, this has been written by the CAG, is a member of parliament and he is former ex-CAG of India, ठीक है. As we know, market failures manifesting in various forms such as monopolies, externalities and information asymmetries not only diminish economic values but all. अब इतना डिटेल नहीं जाना, but you should be knowing something about it. जैसे India has the world's second largest internet user base, ये पता होना चाहिए. Second largest internet user जो वो इंडिया में है. Now the homework is find out which one is the first one. So after the class is over, write it in the comment section. The first country to have the maximum number of the largest internet based user. ठीक है, second India है and ranks 8th globally in terms of time spent. Time spent on mobile apps में 8वें नंबर पर है. Okay,
So the average daily mobile usage app has surged 4.9 hours, a 32% increase since 2019. So average use जो है वो 4.9 hours लगभग 5 घंटे के बराबर है, जो कि 2019 के मुकाबले काफी हद तक बढ़ा है इंडिया में। यार इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें when we talk about exposure to the digital actually online things and all, online gaming industry in India is predominantly a homegrown startup ecosystem and all, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत सारे कंसर्न्स भी है। जैसे गेमिंग की बात करो, उसमें क्या है, गेमिंग एडिक्शन भी तो होता है ना। अब कोई बंदा गेम खेला तो खेलते चले जा रहा है, ओके, एंड दैट्स वेरी डेंजरस, ओके। देन इट मे कॉज मेंटल इलनेस एंड अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज, एंड प्राइवेसी वायलेशन भी हो सकता है। कोई बंदा अपने पर्सनल छोटा बच्चा मान लीजिए 15-16 साल का लड़का है, एंड दैट गाय इज प्लेइंग गेम एंड ही इज गिविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द फैमिली। कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी प्राइवेसी रिवील कर दिया, है ना। डाटा सिक्योरिटी कंसर्न है। Then money laundering and national security concerns are other realities as well. Sometimes online से क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड का डर होता है ना। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब होता है मूविंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन एन इलीगल वे, है ना, इन इलिजिटिमेट वे एंड ऑल। So national security concerns is also there and all. These are the things being talked about. These issues are symptomatic of a large problem of market failure arising primarily out of insufficient regulation and all. ठीक है, तो रेगुलेशन इनसफिशिएंट है, नहीं जितना रेगुलेशन होना चाहिए उतना शायद नहीं है। सो वी नीड टू रेगुलेट मोर दीज गेमिंग इंडस्ट्रीज। सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट। फिर एक और आर्टिकल थी 23% 2023 रिकॉर्डेड मेनी ऑफ द हॉटेस्ट डेज। हाँ, इस तरह की न्यूज आई थी कि 2023 को वन ऑफ द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड माना गया है, ओके। लेकिन लेट्स सी फॉर 2024 बिकॉज राइट नाउ इन नॉर्थ इंडिया वी आर सीइंग ह्यूज फॉग, है ना, एकदम ठंड बहुत ज्यादा है, ओके। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग इट। स्टेटस ऑफ मेडिकल केयर ऑन इंडिया ट्रेन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप थोड़ा सा देख लेना। देखो होता क्या है, फर्स्ट थिंग दे टॉकिंग अबाउट कि लगभग 2.3 करोड़ पैसेंजर ट्रेवल्स पर डे ऑन रेलवेज, है ना। तो रफली ट्वाइस द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ द उत्तराखंड स्टेट इन 2022 पर। जितना उत्तराखंड में आबादी है उसका डबल लोग ट्रेन पे पूरे इंडिया में सफर करते हैं। सो दैट्स अ बिग थिंग ऑफ कोर्स, है ना। So the Balasore train accident in June raised important concerns about railway safety. तो जो बालासोर एक्सीडेंट हुआ था 2023 में लास्ट ईयर जून में, उसे बहुत सारे रेलवे सेफ्टी से रिलेटेड चीजें कंसर्न की गई थी ना, बहुत सारे कंसर्न्स रेज किए गए थे। उसके बाद अगर आप जाने, सो इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट। देखो एक्चुअली मेन जो बात कर रहे हैं कि वो क्या इमरजेंसी का, अगर कहीं मेडिकल इमरजेंसी होती है, लेट्स से इनसाइड द ट्रेन, सो इज देयर एनी प्रोविजन फॉर दैट और नॉट। जैसे आजकल डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, इवन हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं। मान लो कोई ट्रेन पे ट्रैवल कर रहा है, लेट्स समवन इज ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन एंड समवन स्टार्ट्स हैविंग अ हार्ट अटैक, और पेन, चेस्ट में पेन होने लगा और हार्ट अटैक टाइप की चीज होने लगी। तो अब वो ट्रेन चल रही है तो बीच में रोकना तो मुश्किल है, डॉक्टर के पास ले जाना। सो इज देयर एनी इमरजेंसी मेडिसिन फॉर दैट इनसाइड द ट्रेन? क्या ऐसे केस में ट्रेन के अंदर मेडिकल इमरजेंसीज है, वो जो हार्ट अटैक के लिए जो इमरजेंसी दवा होती है वो है कि नहीं है? या अगर किसी को डायबिटीज हो गया, एक बैक हाइपरटेंशन, ये इस तरह की बीमारी, बिकॉज दीज थिंग्स आर ऑन द राइज, स्पेशली द हार्ट अटैक आफ्टर द कोविड एंड ऑल वी हैव सीन। तो क्या उसके लिए दवा है कि नहीं? तो जैसे एग्जांपल इज गिविंग इन 1995 a special first aid box was provided in long distance superfast train शताब्दी और राजधानी। तो जैसे शताब्दी या राजधानी में फर्स्ट एड बॉक्स का कॉन्सेप्ट लाया गया था। दिस बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 49 आइटम्स उसमें होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर बाद में ऑगमेंटेड एड बॉक्स लाया गया और उसमें कुछ चीजें इंप्रूव की गई एंड ऑल। फिर वो एक एग्जांपल बता रहे, इज एक्चुअली द ऑथर इज कोटिंग एन एग्जांपल। देखो ये वाला, हाँ, दिसंबर लास्ट ईयर एक इंसिडेंट हुआ था। एक ऑथर है पार्थ शर्मा, ही वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून ऑन वंदे भारत। तो वंदे भारत पर दिल्ली से देहरादून जा रहे थे एंड उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि स्टाफ से कि क्या ट्रेन पर कोई डॉक्टर है। वाई? बिकॉज ही वाज रश्ड टू सी वन कोच एंड फाउंड अ 61 ईयर ओल्ड हैड ऑन सडन ऑनसेट एंड ऑल। तो उन्होंने देखा, ये जो ऑथर ने, द ऑथर सॉ दैट अ पर्सन ऑफ 60 ईयर ओल्ड ही वाज सफरिंग फ्रॉम स्वेटिंग, गिडीनेस, अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड ऑल। तो उनको ये सब इश्यूज हो रहा था ट्रेन के अंदर, हाइपरटेंशन एंड ऑल, एंड देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक। ऐसा लोगों को लग रहा था कि उनको बहुत तकलीफ हो रही है, शायद हार्ट अटैक हो जाए। अनफॉर्चुनेटली द इमरजेंसी किट ऑन ट्रेन वाज इनएडिक्वेट। तो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि उतनी इमरजेंसी किट अवेलेबल नहीं थी। जैसे एक एस्पिरिन होता है, एक लाइफ सेविंग ड्रग होता है। जैसे किसी को हार्ट अटैक आ रहा होता है ना, तो इमीडिएटली अगर एस्पिरिन दे दिया जाए तो वो थोड़ा सा, मतलब वो कंट्रोल कर लेता है, ब्लड थिनर वगैरह होता है, सो इट कंट्रोल्स इट एंड ऑल। तो क्या वो सारी चीज, तो ऐसा लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल कि इवन इन वंदे भारत एक्सप्रेस these kits were actually not present, adequate medicines were not there, जितना होना चाहिए। तो ये भी एक इशू है कि yes,
देयर हैज टू बी सम इमरजेंसी मेडिकल किट होना चाहिए हर ट्रेन में. So if someone is suffering from these types of, let's say, chest pain, heart attack or something like that, तो emergency जो दवा होती है कम से कम वो दे दे, फिर नेक्स्ट स्टेशन पे आके वो चला जाए हॉस्पिटल, बट एटलीस्ट फॉर दैट मैटर, है ना. So that is what you should be doing. Urdu poet Munawwar Rana passes away at 71. So that was also in the news. He was a very famous poet and all. And he had got Sahitya Academy Awards in 2014. Born in Raebareli, Uttar Pradesh and all. Okay. So this is all about today's class. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.